स्टार्ट करते हैं। B O E, B O E, this is angle at center, angle at center. Similarly, one more angle that produced from the same chord DE, that is DBE, BBE, both produced from the same chord. One is at center and the other one is at circumference. At circumference, angle at circumference. तो property क्या है? When angle at center and angle at circumference, if both produce from same chord DE, then angle at center is twice then angle at circumference. अगर एक ही chord से produce हो रहे हो दो एंगल, एक सेंटर पे हो और एक सर्कमफेरेंस पे हो, तो सेंटर वाला क्या होगा? ट्वाइस होगा किसके? सर्कमफेरेंस वाले के। तो अगर सेंटर गिवन है तो सर्कमफेरेंस वाला क्या हो जाएगा? If it's 138, angle at center is 138, then circumference वाला क्या होगा? 69. Now one more property, DBE, DBE, this is angle at circumference. DAE, again angle at circumference, and both produce from the same chord DE. DE is the chord DE. Again देखें DBE, BAE, they both produce from the same chord which is DE, and both angles at circumference. So angle at circumference are equal if produced from same chord. तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई। अगर ये 69 होगा तो ये भी 69 होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है? Then OA is the radius, A is the tangent point. Radius when fall at tangent point it makes a right angle. Radius at tangent point makes a right angle. तो यहाँ पे 90 क्या फॉर्म करेंगे? When radius fall at tangent point it makes a right angle with tangent line. ठीक है? तो 90 हो गया, 90 minus 69, this one will be 21. Now look at this triangle OEA. This triangle is made by the two radius. ऐसा ट्रायंगल जो दो रेडियस से बनता है, रेडियस सेम होते हैं तो इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये 138 तो ये कितना होगा? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये रेडियस है तो ये सेम होंगे। अगर इसके सामने 69 है तो इसके सामने भी क्या होगा? और ये अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा फिर? 57. एक्सीलेंट। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये वाला एंगल मालूम करना है लास्ट। अब यहां पे देखते हैं AD is the diameter, angle produced from the diameter to the circumference. Angle at circumference makes a right angle. Angle at circumference makes a right angle when produced from the diameter. Angle at circumference makes a right angle when produced from the diameter. This is called right angle in a semicircle. This property name is right angle in a semicircle. तो 90 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 21. अब आ जाते हैं आगे A B C D. A B C D. This is the quadrilateral which is inside the circle, whose all four vertices, vertex number 1, vertex number 2, vertex number 3, vertex number 4, whose all four vertices touches the circumference. A quadrilateral which is inside the circle, whose all four vertices touches the circumference, such type of quadrilateral is said to be cyclic quadrilateral. तो ये हमें आइडेंटिफाई हो गया कि A B C D is a cyclic quadrilateral. Now what is the property of cyclic quadrilateral? Sum of their opposite angle. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले और तीसरे का सम मतलब A और C का सम is equals to
180, दूसरे और चौथे का सम मतलब b और d का सम is equals to 180. This is the property of cyclic quadrilateral. But first you need to identify what is cyclic quadrilateral. पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी. अच्छा जी, अब हमें a और c अगर मालूम करना तो हमें ये एंगल बताना चाहिए. Now look at this triangle B E A. अब यहाँ पे तीन एंगल, तीनों हमें पता है. Let's suppose this one is x 21 एंगल नंबर 1 ट्रायंगल का, 57 एंगल नंबर 2, 69 plus x एंगल नंबर 3 is equals to 180. 21 plus 57 plus 69 कितना हो गया? 147 plus x is equals to 180. 147 वहां जाके हो जाएगा minus 147, x is equals to 33. तो ये आ गया 33. Now if angle A is 33 तो angle C क्या होगा? A और C का सम 180, A और C का सम A and C. तो C क्या होगा? 180 minus 33 बताइए 147. तो आप इस तरह से एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप जब तक प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगी आपको उसमें. जैसे यहाँ पर देखो मैंने कितनी प्रॉपर्टीज अप्लाई की है. एंगुलर सेंटर इज ट्वाइस देन एंगुलर सर्कमफेरेंस, एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है. देन एंगुलर सर्कमफेरेंस DBE DAE, एंगुलर सर्कमफेरेंस प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम कोड आर इक्वल, दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई की है. फिर उसके बाद रेडियस एट टेंजेंट पॉइंट मेक्स अ राइट एंगल विद टेंजेंट लाइन, तीसरी प्रॉपर्टी ये अप्लाई की है. देन व्हेन इन अ सर्कल व्हेन अ ट्रायंगल मेड बाय टू रेडियस बिकम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, चौथी प्रॉपर्टी ये अप्लाई की है. ठीक है. उसके बाद व्हेन एंगल प्रोड्यूस फ्रॉम डायमीटर टू द सर्कमफेरेंस मेक्स अ राइट एंगल विद सर्कमफेरेंस, पांचवी प्रॉपर्टी ये अप्लाई की है. देन ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, छठी प्रॉपर्टी ये अप्लाई की है. सो आपको प्रॉपर्टीज का पता होना लाजमी है. एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज आती हैं. बात समझ आ रही है? तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप कब कर सकेंगे? ये क्वेश्चन कब कर सकेंगे? ये बहुत आसान भी और बहुत मुश्किल भी. आसान जब है जब आपको प्रॉपर्टीज आती है, मुश्किल जब है जब आपको कोई भी एक प्रॉपर्टी नहीं आती तो सारे क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से. कोई भी एक प्रॉपर्टी मिस हो जाएगी तो आपसे सवाल नहीं होगा. ठीक है. ठीक है ना.